बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल। मैं हूं देवाशीष और ये है फन। तो आज हम बहुत टाइम के बाद जाकिर नाइक की वीडियो लेके आए हैं, जो कि बोलते ना बहुत नामचीन इंसान है और उनकी बोलते ना नॉलेज बहुत ज़्यादा है और वो बुक सारी उन्होंने रिलीजियस बुक्स पढ़ी और सब कुछ वो बिना देखे सारी आयात है या जो भी सारी चीज़ें वो सबके नाम लेके वो सब कुछ आंसर्स दे देते, फास्ट आंसर्स देते हैं। उनके पास सारे आंसर्स है इस्लाम रिलीजन के बारे में। तो ठीक है, आज भी एक वीडियो है, डिबेट है। तो ये हिस्टोरिक डिबेट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर अबाउट इस्लाम एंड 21st सेंचुरी। तो देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन हिस्टोरिक डिबेट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है डिबेट और जाकिर नाइक कैसे आंसर्स देते हैं। हमें अच्छा लगता है, मजा आती है। शुरू करते हैं। Good afternoon, Dr. Naik. My name is Izzy Westbury. I'm the secretary here at the Oxford Union. I have a very short question to ask. You talk about the hijab being something that's served to protect a woman. Surely it's extremely patronising and degrading to prevent a woman from making that decision for herself. How can you answer that? What's your question, sister? Can you repeat the question? I said, in your speech, you talk about the hijab being something that serves to protect a woman. But how is it not extremely patronising and degrading in not allowing a woman to make that decision herself? Sister posed a very good question, that when I say that hijab is required for a woman, isn't it not degrading for the woman to patronize it? Isn't it degrading? If you read the Quran and Islam has prescribed hijab. That means the woman should be covered. The only part that can be seen are the face and hands up to the wrist. This is for the modesty. And it is not only mentioned in the Quran, it is also mentioned in the Bible. If you read the Bible, in the 1 Timothy, chapter number 2, verse number 9, it says that women should be dressed up with shamefacedness. They should dress up with sobriety and should not wear braided hair or of gold or pearls. It's further mentioned in the 1 Corinthians, chapter number 5, verse number 7 to 11. The woman that does not cover a head, then she dishonors her head. A head should be shaved off. Anyway, I don't agree with this. I'm just quoting you from the Bible. Same way, if you go to the Vedas, it says that the woman should cover the head. So all the religious scriptures, they talk about the woman covering their head. It is for modesty. It is not to degrade the woman. And if you analyze, there was allegation made against me saying that Dr. Zakir Naik says that if they don't wear hijab, that if you wear Western clothes, there are chances the woman will be raped. It is a misquotation again. What I said, that if women wear revealing clothes, they have more chances of being raped. What I was doing, the same newspaper, Sunday Times, which spoke against me 1 year before, on the March of 9th, 2009, Sunday Times carried an article. In Britain, 1 out of 7 feel that the women who wear sexy revealing clothes, she should be hit. I'm sorry, I don't agree with it. This is the statistics that was given in the Sunday Times on the 9th of March 2009, that in Britain, 1 out of 7 Britishers believe that the women who wear revealing and sexy clothes should be hit. I disagree with this. Furthermore, one more article came in 2005 in the same newspaper, Sunday Times. It said that 26% of the Britishers, they feel that wearing revealing clothes is partially or totally responsible for the rape. So what I say, that the more modest you are dressed up, you are respected more. So Islam has prescribed the modest hijab for the woman, not to degrade her but to uplift her. I do agree there may be cultural differences. Islam cannot force anyone to adopt it. There are cultural differences. For example, I'll give you an example, that some societies, what they feel, that even looking at a woman is immodest. Some societies feel looking is no problem, but touching a woman is immodest. Some of the society feels shaking hand is no problem. Some society feel kissing no problem.
Some society feel doing anything as long as both agree is no problem. Different societies and different cultures have got different rules and regulation. When I went to America, while I was giving a talk, one of the Americans told me, "You Eastern women, you're immodest." I was shocked. So I said, "Why do you call Eastern women immodest?" He told me, "You Eastern women, you expose your belly." So in America and Western country, exposing belly is immodesty. In India, exposing belly is not immodesty, wearing shorts is immodesty. So what I've realized, sister, there is different culture, there is different system. Islam cannot force anyone to adopt. It's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 256, la ikraha fid din, there is no compulsion in religion. But if some women want to adopt the hijab because they feel modest and they feel respected, I feel no other woman should disagree. And when I've been to UK, I've seen hundreds and thousands of women who do cover their hair and who feel that they are uplifted because of this modesty. Hope that answers the question. Thank you for coming here. We really do appreciate it. And thank you for your complimentary words of this union being a bastion of free speech. With that same principle of free speech in mind, don't you think that I or anyone should therefore have the right to go to a Muslim country and proclaim the Christian gospel of Jesus Christ, the Son of God? Well, as the question, with the same right of freedom of speech, doesn't he have the right to proclaim the Christian Bible in any Muslim country? Brother, as we know today, all the Muslim countries per se do not follow Quran and the Hadith in the true sense. There are many Muslim countries, some may be close to Islam, some may not be close to Islam. Depending upon each country, they may have their own law. So what you have to do, you have to ask that particular country which does not permit you to preach your gospel, what is the reason that they don't want to preach your gospel? Dr. Naik, thank you very much for your talk. The question I have is, you profess to be a man of peace. You've spoken very eloquently about the idea of peace in Islam. Peace is just in front of your microphone as you stand there. And I agree with you in many senses. But my question is, why then does your message still seem so controversial? Why are there figures within the Islamic world, why are there fellow Islamic clerics who see your... तो ये वीडियो हमने देखी डॉक्टर जाकिर नाइक की, जो भी बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हुए. उसमें पहला क्वेश्चन वही था कि हिजाब पहनना सही है या नहीं है. तो इस्लाम में कुरान में ये चीज़ लिखी हुई है, डॉक्टर जाकिर नाइक बता रहे कि हिजाब पहनना मतलब मॉडेस्टी के लिए है, इज्जत बढ़ाने के लिए है, ना ही कोई नेगेटिव एंगल हिजाब में डाला हुआ है कि आपको अपने बाल छुपाने, आप फेस दिखा सकते हो, आप हैंड्स दिखा सकते हो. तो ये सारी चीज़ों को नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया है हर मॉडर्न मीडिया जो भी यूज़ करती है उसको. और बहुत सारे वो वही बता रहे थे कि बहुत सारे अलग अलग होता है रिलीजन्स है, उनके अंदर अलग अलग चीज़ें बताई गई है कि कहीं पे ऐसा है कि पेट दिखाना, स्टमक दिखाना वो अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना ये अच्छी नहीं मानी जाती. कहीं बोलते हैं कि किसिंग नॉर्मल चलता है, कहीं हाथ मिलाना. किसी कल्चर में ऐसा चलता है कि सब कुछ करना, सब कुछ नॉर्मल है. तो ये मतलब सब कुछ करना नॉर्मल है, ये बताया है. तो बहुत सारे ये सारी मतलब बोलने का मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट हिजाब, इट्स अबाउट योर ओन पर्सनालिटी. आप कुछ भी पहनते हैं या नहीं, बोलते ना पूरा कपड़े पहनो या थोड़ा आप कोई भी स्टाइल पहनो. आई थिंक सामने वाले की जो थॉट प्रोसेस होती है
वो गलत होती है, ना ही कोई वुमेन गलत होती है। पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि गलत थॉट लाना वो सामने वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो वो चीज़ ना हो वही बेहतर है। तो आप बोलते हैं कि जो भी मैन है, जो भी उनको सीख दो, उनको समझाओ। नहीं, वो आप better अपना रहेगा। नजरिया सुधारो पहले। नहीं, क्योंकि हाँ वो भी है कि नजरिया जो भी बोलते हैं ना, मेल है वो सामने वाले को ब्लेम करता है, तो वो गलत चीज़ है। मेल जो है उनको अपने ही नजरिया सुधारना होगा, उनके ही थॉट प्रोसेस चेंज करने होंगे, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। दूसरी एक बात की है कि हर रिलीजन्स, सारी बुक्स में बोलते हैं ना कि पीस के बारे में ही बात की गई है, सारे रिलीजन्स बुक्स के बारे में, और सारे रिलीजन्स टेररिज्म के अगेंस्ट है। हाँ, तो ये बता रहे थे कि कुरान ही एक ही रिलीजन है। इतने सारे जो प्रॉफिट्स वो बता रहे थे, प्रॉफिट नोआ है, प्रॉफिट एडम है, प्रॉफिट जीसस है, प्रॉफिट मोहम्मद, हर एक जो भी प्रॉफिट है उन्होंने कुरान के बारे में ही जिक्र किया है, हर एक रिलीजियस बुक्स में भी जिक्र किया है। और बोलते कि एक सारे रिलीजन्स में पीस के बारे में बात की है, पर कुरान के बारे में एक बात की है। वो बता रहे थे कि अगर आप एक ह्यूमन का बोलते हैं ना, आप किल करते हो, तो आपने पूरी ह्यूमैनिटी को किल किया है, और अगर आप एक ह्यूमन को बचाते हो, पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया है, तो एक बहुत अच्छी बात की है, और ये कुरान में लिखी गई है, जो कि कोई भी रिलीजियस बुक्स में नहीं है, सिर्फ कुरान में ही है। तो यही बताया था, देयर इज ओनली वन रिलीजन दैट इज इस्लाम, एंड देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह, और जो भी प्रॉफिट है उनके बारे में बात की गई है। तो ये था डॉक्टर जाकिर नाइक का डिबेट ऑक्सफोर्ड में। तो ये ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे थे, ब्रिटेन में गए थे, और पीस टीवी को आई थिंक पूरे वर्ल्ड में बहुत देखा जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है। तो ठीक है, ये था हमारा रिएक्शन। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर लिखना अल्लाह अकबर, और लाइक्स कमेंट्स और शेयर करते रहना। और चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रान।